how you are going to choose a topic, and at the same time, if there is an option for choosing industrial training option as well, and you may exercise an option for software training as well. So how we will do that? So first of all, this is a course of MSc Renewable Energy and Environment, and it is a course of second semester of this particular program. Now, what is the objective of project course? As you all are going through various subjects in first semester itself, like you are learning about heat transfer, you are learning about energy and environment, and you have basic ideas of mathematics, basic idea of energy conversion process as well. So after these theoretical learning, we want you to apply all these theoretical knowledge into some field-based problem, or you can able to develop a scientific and technology concepts as well. So this is why we have placed this industrial training or minor project in second semester, so that you have some practical knowledge of this particular thing. So our objective for this project course is to help you all to develop an ability to apply the scientific and technological concepts that you have already learnt in your first semester, and the various tools and techniques which should be utilized to solve the various issues that are related to energy and environment. These issues should be related to renewable energy systems, energy resources, and whatever the energy resources that we were using earlier, what are the problems associated with those particular energy resources and how we are going to address these problems. You can develop an ability to solve these problems, and also the problems related to energy conservation, how you are going to conserve energy, how you are going to address the energy management problems that are arising nowadays, how you are going to address the problems of pollution or climate change, etc., that are available in the world due to energy resources. You can think about how you are going to change or how you are going to increase the efficiency of various systems, how you are going to utilize various renewable energy systems, and this kind of particular problems that are practically feasible you have to choose. Or you can go to any industry where the power distribution, power generation, etc. is going on, and there you can learn practically how the processes or systems are working. You can learn about the power generation either in any thermal power plant, in hydel power plant, or renewable energy based power plants. You can learn about various systems that are working there. Suppose you are going to a thermal power plant, then you can learn that how the steam is generated, how the electricity is generated from the steam, how turbine is working, how various elements of power plants are working. Similarly, you can learn in a power distribution center that how the power is distributed, what is the role of transformer there, how many losses are there, how those losses are compensated, and this kind of thing you can learn in any industry. You can also learn about the energy management processes. For that, you can go to some energy auditor or energy manager and learn the processes there. Or you can go to any industry, maybe you can learn that how the boiler losses are compensated. This kind of thing you can learn there. So you have to choose industry on your own, and then you have to go there and learn the processes. The only thing is that whatever you are choosing should be in the field of renewable energy and environment, or energy and environment. So what is the prerequisite for this particular minor project? So after completion of your first semester, you can do this minor project.
So what is my suggestion? My suggestion is that you can submit your synopsis or project proposal. We will come to that, what will be the synopsis or project proposal. You can start working on this minor project synopsis while in just before your first semester examination as well, so that when your first semester examination will be over, you will receive the approval of the synopsis. If it is not possible, just after your examination, within 1 month, you should submit your synopsis. And accordingly, we will do the approval procedure, etc. Now, which kind of project you can undertake? You can undertake project on the basis of comprehensive case studies. You can do any kind of case study. It should cover any energy conversion system, energy conservation measure, or you can choose any environmental issue that is due to these renewable energy resources. You can also go for field-oriented analysis, and you can go for the design problems or design problems also, such as you can think of designing an equipment or any element. Suppose you are going to design a turbine, then that turbine should be different from the turbines that are conventionally in use. Or even if you are going to study about the various parameters on which the efficiency of turbine depends, then you can go for that particular thing also. So you can choose any element of energy conversion system and you can study about it. You can learn about the biofuels or the pollution related to these biofuels, etc. You can learn about energy management, how audit, etc. takes place, or how the conservation of energy takes place in any industry or organization. You can learn about, or you can compare two organizations on the basis of energy conservation, that how they are doing it. You can validate the theories that you have learnt already. You can go for survey based analysis as well, and then you can learn the various processes that are there. And so the project should be study based, analysis based, field based, or even case study we will consider as the topics for these minor projects. Now, how to do this minor project? So for this minor project, there will be 2 supervisors. One will be allotted from the School of Engineering and Technology, which we will call as internal supervisor, and another supervisor who will have the experience in the relevant field. He should be your local supervisor. You have to choose this local supervisor on your own from the field at a nearby site, office, industry, or any college or university. The local supervisor will be identified by you, and there should be certain qualification of this local supervisor. So this local supervisor should have MS or MSc or ME or MTech degree in the concerned discipline. Concerned discipline means in the discipline in which you are going to prepare the minor project. And if he or she has a master degree, he or she should have at least 2 years of experience. Or if he or she has PhD degree in the relevant field, then no experience is required. So this local supervisor will be responsible for guidance in preparing your project proposal, your actual performance, and monitoring the progress of your work. Basically, you can choose this local supervisor from your workplace or from the nearby area. Why? Because it will be easy for you to discuss about the various problem, how you have to move forward, and he will guide you step by step that how you have to do each and everything. So first thing is that you have to choose a topic, and then accordingly you have to search for a local supervisor. And then after identifying this local supervisor, you have to finalize your topic
and how you are going to do, what should be your objective, what should be your methodology. After discussing with your local supervisor, you can formulate these things and then you will prepare the synopsis. Now here the internal, after finishing these things, you will send it to here, and here in School of Engineering and Technology we will provide you, or we will allot and attach you with an internal supervisor depending upon your project area, and this internal supervisor will be responsible for guidance regarding problem formulation and methodology of the project selected by you. So basically this internal supervisor, who will be from School of Engineering and Technology, will approve your synopsis and your local supervisor as well. The synopsis will be approved by objectives or methodology that you have mentioned and the various points as well. So the internal supervisor here will monitor, will check your synopsis and will see that what is the scope of this synopsis, whether it is feasible to do this particular study for the minor project, it is related to the domain of energy and environment, and at the same time he or she will approve your local supervisor as well. As the requirement of local supervisor or the educational qualification of local supervisor is already mentioned in the biodata, he will check that whether your topic and the research area of your local supervisor, or if your local supervisor is having experience in that particular field or not. So choose your local supervisor according to the subject area in which you are moving forward. Then after receiving your synopsis within 15 days, within 15 to 20 days, we will inform you about the approval or rejection of this particular synopsis. Now, where you have to send your synopsis and what should be there in your synopsis. So, you are advised to send your project proposal. So, what will be there? Your project proposal will be there, biodata of your guide will be there, and pro forma which is attached in your project guide should be there. And there the project proposal and the biodata of your local supervisor should be signed by the local supervisor, and the pro forma will be signed by the student as well. And this you have to send to the coordinator, projects, MSCRWEE, School of Engineering and Technology, Ignou, New Delhi. In case if your project proposed supervisor is not acceptable to the school, you shall be advised so, and in such cases you should change the supervisor before the proposal is considered for further approval. Then you are advised to select your supervisors who are active professionals in the relevant area of the topic that you have selected. Suppose if you have selected a topic related to heat exchangers, who should be your supervisor? It should be either from the physics background or mechanical engineering background or chemical engineering background or energy, or he should be a working professional in industry where heat exchanger processes are going on. Or suppose he is a physicist but he has some publication in the field of heat exchanger, then also you can choose him or her as a research supervisor. Similarly, if your topic is in the area of climate change, then your supervisor should be either from the energy or from the environmental background. So while choosing your project supervisor, just keep the relevant area of your topic and the area of your supervisor. It should be matching, because he should only guide in his own field. He couldn't guide you in the field that is not related to his or her discipline. So be careful while choosing your local supervisor. Now comes the proposal formulation. How you have to formulate your proposal.
You have already thought about your topic, you have already decided your title, then you have chosen your local supervisor, and then you have discussed about your topic, methodology and objectives with your local supervisor. Now you have to make your synopsis. Now be very careful while making your synopsis. There are several points that you have to cover in the synopsis, but the objectives and your research methodology should be very, very clear. So your synopsis should clearly state the objectives and research methodology of whatever proposed project you are going to undertake. It should have full detail of the rationale, sampling instrument that you are going to use, or limitations, or how you are going to collect the data, what should be the future direction for further study, etc. Whatever is given in the format. Actually, it is given in the prescribed format of the synopsis, that earlier there should be introduction, then rationale, then on the basis of rationale you will give your objectives of this particular study, and then what should be the methodology. And objectives and methodology should be matching. For example, your objective is to analyze any process or to analyze a combustion analyzer. So when you are going to write about the methodology, then what you should do should be in line with your objective. Suppose you are going to study the performance and emission characteristics of an engine. So when you are writing about the methodology, first thing you will write that you have to take an engine, and what will be the specification of that particular engine, that should be written there. Then which kind of fuel you are going to use there, that description of that particular fuel should be there. What are the properties of that particular fuel that you are using? Suppose you are going to use a compression ignition engine, then you have to mention the fuel as well, that whether you are going to use hydrogen, or you are going to use diesel, or you are going to use biofuel. So you have to mention whatever things you are going to use there. Then why you are going to use these things or equipments or fuels or any consumable item there. You have to give a list and there is specification. And then how you are going to take the data. Which are the things which are the components that you are going to record from the experimental setup. What are the various elements that are there in your experimental setup that should be there. Then on the basis of that you will give each and everything. Then how you have interpreted various formulas that you have chosen, all things should be there in your methodology section. And on the basis of that you will give that what will be the future scope of this particular thing. Then detailed result and discussion will be the part of your final major project. But the methodology should be clear in the synopsis as well. Then when and how to submit. You have to submit the hard copy of your synopsis and you have to send it to the coordinator project, MSc Renewable Energy and Environment Program, School of Engineering and Technology, Ignou. Proposal incomplete in any respect will not be accepted, and you are advised to retain a copy of the synopsis with you as well. You have to send this in hard copy to us. All the 3 documents will be there: biodata, your project synopsis and the performer. Now, after receiving this from you, within 2 weeks we will inform you whether the project is approved or not approved. If it is not approved, you have to resubmit it again. In case of resubmission or non-approval, you have to reformulate the project on the basis of the comments or suggestions that are communicated to you by your internal supervisor. In case of this revised project synopsis, you have to submit the revised project proposal performer, copy of rejected synopsis and rejected project proposal as well. Now comes the final project. For evaluation in June session, you have to submit your project before 31st May, and for the
evaluation in December session, you have to submit it before November 30th. How to submit? You can submit it in soft copy to the portal of Ignou, or you can submit one project report in the hard copy to the Registrar SED Ignou, Maidangadi, New Delhi. In this case also, you have to keep one copy of the project for yourself as well. Now, various points you have to keep in your mind while making the final project report. First thing is the length of the report. What should be the length of the report? It should be about 40 to 60 and double spaced, and typed pages should be there. Synopsis and project report both will be typed. And each project report must adequately explain the methodology that you have adopted and the directions for future study and your results, discussion, etc. Apart from these things, the project report should contain the copy of the project proposal approval, performa, and certificates of originality of the work by your local supervisor. Apart from these things, you have to submit your project report and synopsis all together. While submitting this report, you have to mention on the top of the envelope that it is project report for MRWP 001. Similarly, when you are sending your synopsis, there also you have to mention in the top of your envelope that it is synopsis for MRWP 001. Now comes the industrial training. For industrial training, you have to choose the industry related to energy conversion, energy production, or energy distribution, or anything where environmental things are going on. For example, climate, about weather forecasting industry, you can go there. You may undergo a training of 4 weeks at any authorized industry or training center or research organization, and then you have to submit a report for the work that was carried out at that designated center. Suppose you are not able to get a local supervisor as well, and you are not getting an opportunity to interact with the industries as well, then you can exercise an option of learning the softwares or computer languages that are related to energy and environment. And on the basis of that particular learning, you have to prepare a report and you have to submit it. The submission procedure for all the reports, industrial training, software training, and this minor project will be similar. So this was all about minor projects MRWP 001. I hope you all will do the things well in time and you will submit it well in time. Thank you very much. Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study Ignou offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project
in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join Ignou's PG Diploma in Electronic Media. We welcome you to join the bouquet of programs offered by the School of Humanities, the Indira Gandhi National Open University, New Delhi. The Indira Gandhi National Open University, New Delhi is a mega university today. It was created by an Act of Parliament in 1985. It is the world's largest university with an enrollment of about 3.5 million current students and 3.2 million alumni. Ignou has also been accorded the highest grade of academic excellence, A++, by the National Assessment and Accreditation Council, or the NAC. Now, during your time at Ignou as a learner, we will help you complete your program of study with world-class printed materials, audio and video programs. We have more than 35,000 academic counselors who will guide you till you complete your program of study. We also provide live interaction with your teachers at the headquarters via teleconferencing mode and live interactive radio counseling besides this, supported by regular TV and radio broadcasts. The School of Humanities was created in 1988, and we welcome you warmly to join any of our programs of study. Ignou degrees, diplomas and certificates are recognized not only in the country but are also very well received across the globe. We look forward to your journey with us, and we welcome you once again. The School of Humanities of the Indira Gandhi National Open University offers more than 26 ODL programs, which is open and distance learning programs, and now more than 10 online programs. A very interesting feature that we have, a very interesting program that we have on offer right now is the BA English Honours. Now, in this particular program, what we've done is we've taken a large number of courses from English, which means is English as a discipline. And then we have also put in other interdisciplinary and skill-based elective courses. So all of them combine to give you the BA English Honours, which gives students the exposure to subjects which is related to English literature as well as other disciplines, and it will introduce you to various aspects of literature through the core, the discipline centric, the ability as well as the skill enhancement and generic courses. Now, it also exposes learners to the importance of interdisciplinary study, which is in keeping with the National Education Policy 2020. And how do we do this? Because we enable learners to opt for courses which are outside their discipline, not just from English. Now, the eligibility for this program, the BA English Honours, is you need to have a 10+2 grade. And for those students who do not have 5 core subjects, right? Especially if they have a SUPW course as the 5th subject, they need to pursue one senior secondary level course from the National Institute of Open Schooling, New Delhi, or any of the state open schools, so that you meet the minimum eligibility condition of having passed in minimum of 5 core subjects. The medium of instruction, needless to say, is English. The minimum duration of the program is 3 years, and the maximum your registration is valid is for a period of 6 years. Now, the BA English Honours program is offered both in the January as well as the July cycles of admissions.
नमस्कार। आज की जो चर्चा का विषय है वो ग्रामीण सामाजिक संरचना है, और जो कि हमारे मास्टर्स प्रोग्राम, पीजीडीआरडी प्रोग्राम और सीआरडी प्रोग्राम के रूरल डेवलपमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट ग्रामीण विकास भारतीय संदर्भ के कोर्स का एक हिस्सा है। ग्रामीण सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो इसके मुख्य अवयव क्या क्या हैं, उनके बारे में हमें बात करनी होगी। और ग्रामीण सामाजिक जो ढांचा है वो किन किन तत्वों से बना है, किन किन आधारों से संपुष्ट है, उसकी बात करनी होगी। तो आज इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रामीण विकास विभाग से आचार्य अरविंदो महतो जी और सहायक आचार्य डॉक्टर बलकार सिंह जी मेरे साथ मौजूद है, और मैं बूटा सिंह। भारतीय समाज और संस्कृति की जब हम बात करें तो उसमें ग्रामीण जो समाज है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रामीण जो सामाजिक संरचना है उसका महत्वपूर्ण योगदान है, या हम यूँ कहें कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय समाज है, उसमें जो ग्रामीण सामाजिक संरचना के तत्व आपको निहित हैं और देखने को मिलती हैं, उनमें हम ये कह सकते हैं प्रधानता है, उनकी प्रधानता है। व्यवहार में, जीवन में वो सब देखने को मिलते हैं। ग्रामीण सामाजिक संरचना में आप देखते हैं कि परिवार व्यवस्था है, नातेदारी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जजमानी व्यवस्था भी इसका एक हिस्सा है, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं समुदाय की बात भी यहाँ पे है, चौपाल है। इन सब की चर्चा भी आज हम करेंगे। तो इसकी क्या पृष्ठभूमि है, इसका क्या आधार है, उसके बारे में प्रोफेसर अरविंदो महतो जी हमें थोड़ा सा बताएंगे जी। जब हम रूरल सोशल स्ट्रक्चर जो ग्रामीण की बात करते हैं तो इसमें 4 अवधारणाएं बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में आते हैं। पहला इसमें है कास्ट, जो जाति है, वो एक आता है। एक जियोग्राफिकल लोकेशन, ये गांव का स्ट्रक्चर जो होगा कितना दूर होगा, शहर से कितना दूर होगा, कैसे लोकेशन में होगा, उसके गांव के रास्ते कैसे होंगे, ये एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। तीसरा विषय इसमें है फैमिली, एक परिवार कैसा होगा, उस परिवार में कितने तरह के कंपोनेंट्स रहेंगे। जैसे आज के दिन में हम देखते हैं न्यूक्लियर फैमिली की बात हो रही है, बट गांव के स्ट्रक्चर में हम ज्यादातर जॉइंट फैमिली और स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। और चौथी एक है सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गांव की एक जातिगत स्ट्रक्चरल एक पॉलिटिकल व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, जिसको हम लोगों ने नया रूप में अभी के रूप में पंचायती सिस्टम के रूप में देख रहे हैं। ब्रिटिश जमाने में जो जमींदारी सिस्टम के रूप में आया, उससे पहले जो जातिगत सामाजिक व्यवस्था था इस रूप में था। तो इसकी 4 पहलू को हम मूल रूप से देख सकते हैं, जिसमें जाति, कास्ट, उसमें फैमिली, उसमें द विलेज का जियोग्राफिकल लोकेशन, और चौथा विषय है इसके सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और इसमें एक 5वां विषय जो पहले इस चारों विषय का पार्ट होता था, लेकिन वर्तमान समय के अवधारणा में एक नया रूप आया है, वो है इकोनॉमी। तो हम मूल रूप से वी कैन से देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। नाउ इसकी पहली कंपोनेंट में अगर बात करेंगे तो इसकी कास्ट सिस्टम पे अगर बात करेंगे तो देखेंगे हमारे जनरली कास्ट सिस्टम में मेजरली 4 तरह का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस तरह में समाज का डिवाइडेशन है। और इसके अंदर फिर अलग अलग सब कास्ट टाइप के स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा जैसे दूसरे रिलीजियंस में भी कास्ट के स्ट्रक्चर है, जैसे मुस्लिम के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सिया, सुन्नी और अदर वेरिएशंस देखेंगे। ऐसे ही क्रिश्चियन में देयर आर वेरियस, बट देयर आर वेरी फ्यू। अगर भारतीय समाज और भारतीय सोशल रूरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। और इसमें एक जॉब रोल डिफाइन है, जिसमें कहा गया है कि पढ़ने लिखने का काम जो है वो ब्राह्मण समाज जनरली करता है। क्षत्रिय समाज जो है वो हमारे रक्षा, सुरक्षा और देश की रक्षा ये काम करता है। वैश्य समाज जो है प्रोडक्शन सेंट्रिक है, जो हमारे एग्रीकल्चर, क्रॉप हो,
एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, इस काम को जो लीड करता है वो वैश्य समाज है। और शूद्र समाज है जो ये सारे काम के लिए जो सर्विस देने का काम होता है उस काम को करता है। और इसमें दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट जो रूप से आता है वो है संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। अगर संस्कृताइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली है कि वन क्लास टू मूवमेंट टू अदर क्लास। जैसे अगर कोई क्षत्रिय समाज से है, अगर ब्राह्मण समाज से कोई आचरण देखते हुए सीखता है या उसके संस्पर्श में आते हुए सीखता है तो दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। जैसे पढ़ने लिखने का काम अगर क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज भी सीख लेता है, पूजा अर्चना करने का काम सीख लेता है, तो दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। और भारतीय संस्कृति में ये प्रावधान हमेशा से रहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में संस्कृताइजेशन का प्रोसेस रहा, जिसको पहली बार आइडेंटिफाइड किए थे एम श्रीनिवासन ने। दूसरा इसका पहलू है वेस्टर्नाइजेशन, जिसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज को देख के, इंडिया के वेस्ट में रहने वाले कंट्रीज, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज को देख के जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन। जैसे म्यूजिक सिस्टम चेंज हो जाना, अलग तरह के फैमिली रिलेशनशिप बन जाना, दिस आर कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम में जब हम आगे मूव करते हैं तो इससे इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिलता है। इससे इकोनॉमी का रिलेशनशिप देखने को मिलता है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ इंटर डिपेंडेंस होते हैं। जैसे जो लोहे का काम करता है गांव में, द पीपल दोज आर डूइंग द आयरन स्मिथ मैन और like that goldsmith man or other hard work activities, they exchange the crop for their product with the farmer. एग्रीकल्चर का जो काम करता है उनसे वो क्रॉप का काम है। ऐसे ही जो बाल काटते हैं बार्बर, उनका एक व्यवस्था है। तो ये जजमानी सिस्टम जिसके बारे में डॉक्टर बूटा सिंह अभी बात कर रहे थे, तो भारतीय व्यवस्था में पहले नहीं दिखती थी, आज के समय में उसका आइडेंटिफाई हुआ, लेकिन इकोनॉमी हमारे समाज के पूरे स्तर तक जुड़ा हुआ था, जिसमें हर स्तर से इसका एक रिलेशनशिप होता था। दूसरा बात हमने किया जियोग्राफिकल लोकेशन की। जो गांव का स्ट्रक्चर है वो आइसोलेटेड प्रोसेस में होते हैं, आइसोलेटेड एक जगह में जनरली बनते हैं। मेन रोड जो सड़क है उससे एक इंटरकनेक्टेड छोटी रास्ता के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। जनरली गांव में कम्युनिटीज का हैमलेट्स बने होते हैं। एक गांव में 2-3 कम्युनिटीज के हैमलेट्स बने होते हैं, जहां एक तरफ एक कम्युनिटी के लोग अपना स्ट्रक्चर के साथ रहते हैं, फिर एग्रीकल्चर फील्ड होता है, उसके बाद दूसरे कम्युनिटी के लोग रहते हैं। ऐसे गांव के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट कम्युनिटीज का एक लोकेशन वाइज स्ट्रक्चर्स भी बने हुए थे। यही चीज अगर हम देखें कि चाइना का अगर बात करें, कंपैरिजन के लिए अगर बात करें, तो वहां पे फैमिली किनशिप के ऊपर डिपेंड होता है ये हैमलेट्स। एक फैमिली के किनशिप चलता है, कौन है माओ फैमिली से, कौन है चियांग फैमिली से, लाइक दैट फैमिली किनशिप चलता है। और हमारे यहाँ चलता है कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस। तो बहुत सारे रिसर्चर ये भी कहते हैं कि इंडियन सिस्टम में भी एक्चुअली ये फैमिली सिस्टम ही था। इसीलिए कहा जाता है कि सप्त ऋषि से ये विभिन्न गोत्र बने, और ये ऋषियों के फैमिली थे जिन्होंने बाद में जाके डिफरेंट कम्युनिटीज में कन्वर्ट हो गए। और चाइना उस एंगल में थोड़ा सा उतना पुराना नहीं है जितना भारतीय ट्रेडिशंस और भारतीय हेरिटेज है ऋषि के जमाने से, इसीलिए वहां पे अभी भी फैमिली के रूप में कम्युनिटीज एंड हैमलेट्स दिखते हैं। सो देयर आर डिफरेंट व्यूज ऑफ रिसर्च इस पे चलता रहता है कि व्हाट आर द फैमिली स्ट्रक्चर्स कैसे हो। थर्ड कंपोनेंट इसमें जो हमने बात किया कि सोशियो पॉलिटिकल बातें हैं। नाउ सोशियो पॉलिटिकल में हम देखते हैं जातिगत समाजपति, जहां कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर गांव के ही लोग मेंटेन करते हैं उनके कम्युनिटी हेडशिप के द्वारा। तो कम्युनिटी के हेडमैन होते हैं, वो उसमें 4-5 लोग और वरिष्ठ लोग उसमें मिले होते हैं। इसको पंच के नाम से भी जाना जाता है।
तो दे डिसाइड कि व्हाट इज जस्टिस एंड व्हाट इज लॉफुल अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमरी प्रैक्टिसेस फ्रॉम थाउजेंड्स और मोर देन ईयर्स, व्हाटएवर। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम होंगे। नंबरदार भी है, प्रधान भी है, हाँ, प्रधान भी हो सकता है, कहीं कहीं चौधरी है, कहीं नंबरदार कम्युनिटी, शब्द भी है, सरदार भी। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ज्यादातर यही देखा गया है कि ये सारे दोस आर द कम्युनिटी हेडमैन। तो कम्युनिटी हेडमैन के थ्रू इसका जब हम लोग देखते हैं समाज में प्रभाव, तो ये ना वहां पे कोई पुलिसिंग व्यवस्था का जरूरत पड़ता है, ना कोई सामाजिक सिक्योरिटी नेट की जरूरत पड़ता है। पूरा सामाजिक सिक्योरिटी नेट से लेके इंटर रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटर रिलेटेड एजुकेशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंटर रिलेटेड द प्रोसेस ऑफ हैप्पीनेस। In one line, we can say that informal social control, informal social management. अनौपचारिक दृष्टि से I am not concerned or agreed on the informal. It was basically the formal structure, which was persist in our country and from 1,000 years. It is the Western view which has not seen it as a formal. They have not recognized it as a formal. They thought it's an informal structure. But when every rule is defined, maybe not in a written form, documentation नहीं है, but not in a written form, but it is from the heritage of the people community wise, the distinguished features. So I cannot say it's a informal, because if you see in Indian circumstance where Vedas were not written in initial stage, it was known as Shruti. So, but later on it has came on a written form. The many more things. Gita was verbally given the ज्ञान by समृद्ध मौखिक परंपरा। Yes, that was the structure, but you cannot say it's informal. That was the basically established formal structure of our rural India and as well all our country, because now we can say we are the 70% in the rural part, or 60 to 70%, but absolutely more than 90%. 50 years back also more than people, 90% people were staying in the rural area. So India basically, that's why Mahatma Gandhi said, if India का जो आत्मा है वो गांव में बसता है. If you want to know India, then you have to understand the village. So I a little bit divert on this topic, but again I persist on this कि the caste, the socio-political, the geographical location, and these are the important features of a society, and this forms the structure. And it has many other various options, the kinship, the marriage, the heritage, the patriarchal, the matriarchal, the other and other many more structures which has consist on the structural system. But we can say this is the overall periphery of our social structure. जी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि जैसे कि अभी तक ये माना जाता है कि भी जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें जो सामाजिक नियंत्रण की बात है, सोशल कंट्रोल की बात है, वो एक इनफॉर्मल हम बताया जाता है क्योंकि उसके पीछे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है. लेकिन अगर हम उनको देखेंगे, उन संस्थाओं को देखेंगे और समाज के ताने बाने को देखेंगे, तो जैसा कि प्रोफेसर महतो जी ने बताया कि उसमें कहीं भी अनौपचारिकता की बात नहीं है. वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड है, एक पूरी फॉर्मल व्यवस्था है. हाँ, उसका एक हम ये कह सकते हैं कि उसको लिखा नहीं गया है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं, इसलिए थोड़ा सा लगता है, लेकिन उसकी एक व्यवस्था है, तो वो एक अलग दृष्टि देता है. इसके साथ साथ आपने उसका आर्थिक आयाम, सामाजिक संरचना का बताया, और उसके साथ साथ जो जातिगत संस्था कैसे भारतीय ग्रामीण परिवेश में दिखाई देती है, उसके पीछे क्या क्या आधार हैं, क्या क्या प्रकारें हैं, उसके फंक्शनलिटी, उसके बारे में आपने बताया. डॉक्टर बलकार सिंह जी, जो हमारी व्यवस्था है उसमें क्या नई चीजें देखने को मिलती हैं अभी ग्रामीण सामाजिक संरचना में? प्रोफेसर अरविंदो महतो जी ने काफी विस्तार से बताया है. बुता जी, तो जो नई व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे ग्रामीण समाज संरचना की बात करते हैं, यदि हम देखेंगे उसका प्रभाव छोटे शहरों में भी है. आज बहुत से कस्टम ऐसे हैं कि जो किसी कारण से ग्रामीण जो लोग शहर में प्रवास करके आज भी उन चीजों को बनाए हुए हैं. बहुत से ऐसे हैं
छोटे शहरों में भी, जिसको जैसे किसी विशेष अवसर पर गांव में जाते हैं, मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, तो ये परंपरा गांव से चली थी। जैसे त्योहार आमतौर पर गांव में ज्यादातर मनाए जाते रहे हैं, बड़े स्तर पर मनाते हैं, हर परिवार मनाते त्योहार को। तो ये कस्टम जाते जाते छोटे शहरों से आज भी जो लोग विशेष अवसर पर, जैसे अब हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन का, लगा लीजिए त्योहार, तीज का त्योहार है, इस तरह के बहुत से त्योहार है कि वो आदमी शहर में रहते हुए अपने गांव को छोड़ना पसंद करता है, जाना पसंद करता है, परिवार के साथ चलता है। बदलाव सिर्फ इतना है कि पहले वस्तु में जजमानी प्रथा की बात की है। जजमानी प्रथा में दो लोग थे, एक सेवा देने वाला, एक सेवा लेने वाला। तो सेवा लेता था वो जजमान होता था देने वाले का। जैसे कोई बढ़ई काम करता लकड़ी का, और लोहार लोहे का काम करता है, सुनार सोने का काम करता है, नाई बाल काटता है, तो जिसके काम करता था उसका वो जजमान कहलाता था। तो ये एक आपस में परस्पर आत्मनिर्भरता थी, ये जो जुड़ाव भी था और लगाव भी था। ये लगाव भौतिक भी था, आध्यात्मिक भी था और सांस्कृतिक भी था। इसमें क्या है कि ईमानदारी से उसको 6 महीने में जब फसल कटती थी किसान की, आमतौर पर जुड़ाव ज्यादा किसान के साथ था। और किसान की जब फसल कटती थी, जो वे लोग जिस तरह का वो काम करते थे उसी तरह का हिस्सा ले जाते थे। ये एक बहुत बड़ा संबंधों का जाड़ था। ये कह सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के बारे में बात करें तो मन में ख्याल आता है कि ग्रामीण समुदाय बहुत पिछड़े हैं, शिक्षित लोग नहीं है, जबकि देखा जाए बहुत समृद्ध एक उनका परिवेश था। ग्रामीण समुदाय बहुत समृद्ध एक तरह से कह सकते संरचना थी। समय के साथ साथ क्या है कि हम नई चीजों को, जैसे प्रोफेसर महतो ने बताया, पश्चिमीकरण के प्रभाव कारण नई चीजें में अच्छी लगने लगी, उनकी तरफ देखने लगे, व्यवहार करने लगे और अपनी चीजों में गौण लगने लगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये देखा जाए संयुक्त परिवार है, आज महसूस होता है कि संयुक्त परिवार का कितना महत्व है। छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी जॉब करते थे, छोटे बच्चों किसके पास आए के पास छोड़ते हैं। जबकि देखने में आता है कि जो यदि हम चर्चा करें इसे थोड़ा सा हटके, यदि कोई प्रोफेसर पति पत्नी है तो उनका बच्चा यदि छोटा है तो आया 7वीं 8वीं क्लास पास होगी, 10वीं पास होगी, तो उसी लेवल पर सिखाएगी जो कि प्रोफेसर चाहता है मेरे बच्चे को हाई लेवल पर सिखा जाए। जो कि माता पिता ऐसे थे वो लेवल नहीं देखते थे, क्योंकि बच्चे की पूरा जीवन साथ गुजारे हैं, उनके माता पिता बारे में बताते थे, उनके पूरी जो संस्कृतिकरण उसके बारे में सिखाते थे। एक तरह से जो पहला स्कूल होता बच्चे का, सामाजिक स्कूल, वो माता पिता से था। तो ये समर्थ थी, गांव की एक तरह से संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। आज महसूस होता है कि वो कहीं न कहीं थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन महसूस सबको होता है कि परिस्थितियां ऐसी बन चुकी हैं, माता पिता ना रहे फिर भी जो बड़े लोग दूर रहते हैं किसी कारण से, नौकरी कारण है, बिजनेस के कारण है, व्यापारी कारण, वे समय निकाल के बच्चों को माता पिता के पास आज भी लेके जाते हैं, दादा दादी कहानी सुनाएंगे, बताएंगे। मैं कहने का मतलब जो ढांचा था बदलाव आया है, लेकिन पूरी तरह से उसे छूटा नहीं है। महसूस ताज भी है कि जो गांव की समर्थ परंपरा थी, कस्टम थे, रीति रिवाज थे, त्योहार थे, वे जुड़ाव आज भी है। जैसे प्रोफेसर महतो जी ने बात की थी कि ये देखा जाए गांव में जो सत्ता थी, सत्ता एक तरह से थी कि कई जगह संख्या बल के आधार पर थी, कहीं आर्थिक जिसका नियंत्रण था उनके पास थी, कहीं जो राजनीतिक रूप से मजबूत उनके पास थी, कई आज पढ़े लिखे थे, पैसे प्रभाव उसके पास थी। गांव में वही पैटर्न आज भी है। पंचायत का थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन वही परंपरा रही है। लेकिन जो पहले सत्ता का जो नियंत्रण था, तो कह सकते थे कि गांव के अंदर जैसे पंच परमेश्वर हम पढ़ते रहते हैं, 5 आदमी फैसला करेंगे, उसको सारे गांव को मान्य था और सर्वसम्मति होती थी। और उसमें सबसे जो खास बात थी, जो विशेष बात थी, जो महसूस कर रहे हैं, समाधान होता था। आधुनिक न्याय व्यवस्था में कह सकते हैं अंग्रेजों की काल से ज्यादा हुई है। इसमें क्या है कि न्याय शब्द होता है, न्याय में क्या होता है कि दंड दिया जा सकता है, पीड़ित को कुछ नहीं मिलता। समाधान में दोनों पक्षों को मिलता है। समाधान करोगे, पर समाधान होते हैं जिसका नुकसान हुआ उसको नुकसान की भरपाई हो और जिसने नुकसान किया उसको दंड मिले। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले एक सामान्य व्यवस्था थी जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट होते थे, और एक उत्कृष्ट व्यवस्था थी लड़ाई झगड़ों का या अपराध रोकने का, या किसी आदमी को भी किसी तरह का मतलब नियंत्रण करने का। और प्रोफेसर महतो जी ने 3-4 बातें और बहुत सी बताई थी जाति व्यवस्था की। जाति व्यवस्था कायम आज भी है गांव में, ठीक है। गांव में एक सिस्टम से जाति व्यवस्था थी, उससे पूरा समाज चलता था। जाति व्यवस्था थी बुरी उसको नहीं कह सकते, क्योंकि उससे समाज चलता था, सबके काम बटे हुए थे। वो पहले से बच्चा परंपरागत रूप से अपने बाल्यकाल से उस काम को परंपरागत सीख जाता था। समय के साथ हमने क्या किया, जो परंपरागत काम थे उसको हमने किसी कारण से सुरक्षित नहीं करके सरकार उनको बढ़ावा दे सका,
उन्हें आगे ले सके। उन्हें बेरोजगारी कारण जाति व्यवस्था का जो साथ साथ जो काम थे, जो बढ़ई का काम करते थे, जो कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे या चिनाई का काम करते थे, मकान बनाते थे, वो क्यों टूट गया? क्योंकि उनको संरक्षित नहीं मिला, प्रॉपर रोजगार नहीं मिला, नहीं व्यवस्था। हालांकि आज भी ऐसे देखते हैं, यदि कम पढ़े लिखे हैं उस परिवार का जो है, जो वंश है, जो लड़का लड़की वही काम अपनाता है। आज भी अधिकतर काम देखोगे कि नाई के परिवार के लोग ज्यादा करेंगे, बढ़ई के लोग बड़े कुशल करेंगे। एक शक्ल की बात करते हो, बहुत शानदार शक्ल था। आप देखो जितने पुराने भी भवन है और जितने भी हमारे कैसे वास्तुकला के नमूने, खासकर विशेषकर जो बहुत बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं या किसी जैसे संग्रहालय बनी, उसमें आप देखोगे आज हम देखते इतनी बढ़िया नक्काशी होती है। तो जैसे कहते हैं कि ये बंगाल में अपने ढाका की जब भारत एक था, ढाका की थी, मलमल में इतनी नक्काशी थी, बंगाल में नक्काशी थी। तो हम देखते हैं कि बहुत सी गुफाएं ऐसी है, पर्यटन स्थल ऐसे हैं कि सुंदर नक्काशी थी, कला का बेजोड़ नमूना था। क्योंकि वो उसको सिर्फ हमें जो गांव की जो बदलाव आया, सिर्फ उसने हमें तकनीकी एक नाम देके उसका कह सकते हैं कि मशीनीकरण से उसका उपयोग किया, जबकि हाथ से बनाई हुई चीजों का उस समय कोई मुकाबला नहीं था। और पहनने की एक विशेष बात चले, जैसे ग्रामीण में आज भी कहावत है कि पहले लोग खादी कपड़े पहनते, खद्दर कहते थे। पहले लोगों को बड़ी चीज सोचती, मोटा पहनो, मोटा सोचो, मोटा खाओ, जो मिलेट्स की बात चलती है। अभी जब यूएनओ ने कहा कि अब मिलेट्स खाने में होना चाहिए, मिलेट्स का मतलब मोटा अनाज। पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, कहाँ से आया? भारतीय परिवेश से आया। मोटा पहनने के मतलब कपड़ा होता था जो खाद्य खाता, शरीर को ठंडा रखता था पसीने के बाद, वो पहनना था। आज भी लोग खाद्य पसंद करते हैं। और मोटी सोच का मतलब था छोटी मोटी चीजों में नाउज के समाज के विकास की बात करें, देश के विकास की बात करें, राष्ट्रीयता की बात करें, वो सोच थी। आज कहीं ना कहीं में महसूस हो रही है, जो पुराने टाइम में हमारे जो ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण समुदाय में जो कस्टम था, जो कल्चरल था, वो बहुत अच्छा था, वो समृद्ध था, वो जरूरत संरक्षित करने की, यही बदलाव है। ये चर्चा जारी रहेगी, अभी एक अल्प विराम हम लेते हैं। आधा घंटा पार हो गया। परिवार व्यवस्था ले आए और सोशल मोबिलिटी। हाँ हाँ, Welcome to Ignou. You're going to lead with a any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches, like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode. So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It provides continuous evaluation to enhance the skills of the learners through assignments, and it provides the opportunity for the learners to appear for the exams twice a year through term end examination system. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of Diploma in Management. Till date, it has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. The school has international presence as well, as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration, which Ignou is offering? First of all, it revitalizes and accelerates the pace of your professional development. And how can it do it? Through this program, which is one of its kind and built
It has been built through the insights and knowledge of faculty and experts. The content aids in new ways of thinking. It provides exciting new opportunities, new approaches of learning. It has contemporary courses ranging from business communications to human resource management, marketing management, financial management, operations management, all sorts of courses which are required in the present times for the industry, and as per the demands of the industry, all the courses have been included in this particular program. It is a uniquely designed program for both the fresh graduates as well as the working professionals, and it is offered pan-India and also in select countries internationally. Let us see the program at a glance. The program name is MBA, and the eligibility criteria for this program is bachelor's degree, minimum of 3 years duration with at least 50% marks and 45% marks in case of the reserved category. The duration of the program is minimum 2 years and maximum 4 years, and the program fee per semester is 15,500. The structure of the program, the total credits of the program, the total credits are 116 because there is one project course which is equivalent to 2 courses. So it comes out to be 29 courses. Otherwise, technically it is 20. स्कूलों, एक बार फिर हम अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्रामीण सामाजिक संरचना, तो उसके बारे में प्रोफेसर महतो जी ने पूरा जाति व्यवस्था और उसके पूरे संरचनात्मक आधार बताए। बलकार सिंह जी ने भी पूरी एक एम्पिरिकल अप्रोच बताई, मतलब एक प्रयोगधर्मिता के आधार पे एक कैसे जो व्यवस्था है सामाजिक संरचना में, जाति व्यवस्था है, जजवानी व्यवस्था, वो कैसे ठहरती हैं, कैसे वहाँ हम ये कह सकते हैं एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं कि इनके एक विस्तृत उपागम की बात कर सकते हैं, या एक हम ये कह सकते हैं कि इसके बारे में और अंदर जाके देखें कि कैसे ये जो व्यवस्थाएं हैं या सामाजिक संरचना में एग्जिस्ट करती हैं। जाति व्यवस्था के साथ साथ नातीदारी व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में इंटरडिपेंडेंसी वाली बात है, और परिवार व्यवस्था है। परिवार व्यवस्था में जैसे क्या क्या उपागम, क्या क्या बातें उसमें आगे आ सकती है। तो प्रोफेसर महतो जी, जो हमारी भारतीय परिवार व्यवस्था है, वो अपने आप में एक हम ये कह सकते हैं कि यूनिक व्यवस्था है, जिसको हम एक शब्द में कहते हैं कि संयुक्त परिवार व्यवस्था है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई विद्वान कहते हैं कि जो एकल परिवार व्यवस्था, नाभिकीय परिवार व्यवस्था या न्यूक्लियर फैमिली की बात यहाँ पे करने लगे हैं, जो कि आज हम देखते हैं कि वो आभासी है। तो इसके बारे में हमारे जो लर्नर्स हैं उनको एक विस्तृत दृष्टि से थोड़ा सा बताइए प्रोफेसर महतो जी। एक अगर सोशल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो जैसे डॉक्टर बूटा ने बताया कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें पहलू जो आता है वो है कि फैमिली, और फैमिली की अवधारणा जब हम लोग करते हैं तो हमेशा हम लोग वेस्टर्न फिलोसोफर ने जैसा बता के गया कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, इस दो डिवाइडेशन में भाग हो जाते हैं, बंटवारे हो जाते हैं। बट लेकिन भारतीय सिस्टम में अगर देखेंगे तो शायद ही कोई फैमिली होगा जो न्यूक्लियर फैमिली होगा, एज पर द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसका ना अपने दूसरे जो जॉइंट फैमिली मेंबर्स है उससे उसको कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो अपने आप में सोशली, इकोनॉमिकली
स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तब उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं वो। बट भारत में ऐसा बहुत कम ही फैमिली होगा जो संपूर्ण रूप से न्यूक्लियर फैमिली हम कह सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ इंडियन फैमिलीज? दोज आर स्टेइंग विथ ए पेरेंट एंड 2 kids और 3 kids और 1 kid। तो क्या कह सकते हैं? तो इसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हुई है और बहुत सारे डेफिनेशंस आए हैं। तो कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हाउस होल्ड। अब न्यूक्लियर हाउस होल्ड और न्यूक्लियर फैमिली, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियर हाउस होल्ड वो होता है कि एक पति पत्नी और उसके बच्चे के साथ रहता जरूर है, लेकिन उसका जो गांव का फैमिली है, उसके पेरेंट्स या उसके ब्रदर, इसके ऊपर उसका इंटरडिपेंडेंसी बना होता है। जैसे दिल्ली शहर में आके कोई बस गया है और यहाँ पे वो कहीं जॉब करता है या बिजनेस करता है और अपना परिवार चलाता है, लेकिन उसका किसानी का काम अभी भी गांव में बचा हुआ है। वो जब भी समय मिलता है उससे डिपेंडेंट होता है, या गांव जाता है तो वहां से कुछ अनाज की 1-2 सामान लेके आ जाता है, और शहरी माहौल में वो कोशिश करता है कि गांव के जीवन को कुछ हद तक तो जिया जाए। जहां शुद्ध वातावरण, शुद्ध खाने की बात हो, उसको कुछ हद तक तो लाया जाए। तो दिस आर कॉल्ड न्यूक्लियर हाउस होल्ड। हम एक हाउस होल्ड तो बोल सकते हैं कि घर में अलग रहता है, लेकिन डिपेंडेंसी उसका पूरा पूरा बना हुआ है अपने जॉइंट फैमिली के तरह ही। जहां जॉइंट फैमिली में एवरीडे रूटीन होता था, खाना एक साथ बनता था, एक ही चूल्हे में बनता था। नाउ देयर इज अ डिफरेंट, 2 तरह का 2 चूल्हे में बन रहा है, 2 घर में रह रहे हैं, लेकिन अलग अलग रसोई है, लेकिन डिपेंडेंसी बना हुआ है। तो ये एक पहलू है जो वेस्टर्न से कंप्लीटली अलग है, और जिसका कोई टर्म स्पेसिफिक तो नहीं कह सकते हैं कि विच इज कॉइंड ए यूनिक टर्म, बट एटलीस्ट वी कैन से दैट इट्स ए न्यूक्लियर हाउस होल्ड, न्यूक्लियर हाउस होल्ड। अब दूसरा बात मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूं, जो अभी बलकार जी भी जैसे कह रहे थे, डॉक्टर बलकार वाज टेलिंग कि हाउ पीपल आर कनेक्टेड टू देयर रूट, एंड वंस इट इज कनेक्टेड टू द रूट, इट कैन नॉट से द न्यूक्लियर. It is a kind of joint kind of environment where the every decisions, if some people are purchasing their land, maybe who is earning in Delhi, they are sending the money, economic support. Those are staying in the rural area, who is doing the agriculture activity for the person who is staying in the urban area in a nuclear household level. So it's a completely interdependence. Each decisions has been taken jointly. Most of the decisions are taken jointly, and the marriage and other things are also taken jointly. So in that way, also I would like to highlight one more thing important, which was discussed in the last phase about the caste and Sanskritization and how it can move forward. So in the caste system also, if you could see, the Indian caste system is basically in the later on stage, which has been written by Rishi Manu in the various form. But it has been observed that Saga Manu's written, the Manu Smriti, which is available, it has been evidenced by various research and manuscript research that it has edited around 18 times. So the caste system, many people say that Manu has given this caste system, that Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, but when we are deep research putting into it, it has seen that 18 time correction of Manu Smriti has done. And who has done, when has done, there is no such evidence is available. So in that time we have to recall the process of Varna, where before the Jati system, the Indian tradition used to persist on the Varna system, where the people's caste or Jati used to decided by their activity. If someone, a son of a Brahman, involved in the security purpose or in the war with the king or the Raja ban gaya, in that circumstance he is become Rajput, Kshatriya. So similarly, a Shudra who studied a lot
and persist the educational benchmark which is required for Brahmin, he become a Brahman. So such situation in Varna Pratha was there. But the Manusmriti when came into existence with hands of current era and doing in research, the Varna Pratha has abolished in the day by day by the various activity. Maybe after that many people, those have corrected it in 18 times, they have done something on, converted this Varna Pratha to caste system and all. And how Sanskritization within the caste system has an option. In the caste system, we had an option that is called, it's a marriage of a person, suppose a higher class person can marry a lower class woman. And that is also possible ki, suppose a Brahman can marry a Kshatriya, can marry a Vaishya, can marry a Shudra. And that is a upward movement of the towards the enlightenment, and that is education. That's why the Brahmins are in top, because education, the Indian system has given the priority, the enlightenment through the education, and that is possible through the education process. And second, a woman from higher class also can get married to a lower class man, and there is also a upward movement. And it has been observed in Indian tradition system that both the system exist through the various processes. And so I would like to say that the inside of the Indian system, the Sanskritization process were involved throughout the Varna Pratha, through the caste system, and in present era also in the rural area, there are many such options. Then people say that before marriage they घोड़ा पे बैठ के शादी करने के लिए जाना. You could see now many people belongs to Shuddha or Vaishya, they also go घोड़ा में बैठ के शादी करने के लिए जाता है. So it's a Sanskritization process where people aspire कि okay, that is the class of choice, so I can also go for such kind of things. And there should not be any restriction. If people have restricted, that is their individual some grudges. But in social structure, never allow such kind of restriction to the other community to become a Sanskritized to the upper class. And that is the structure. That's why if you could see the Brahman get married to a Sudra, Brahman get married to a Vaishya. So these situations are available. In addition to that, we are talking about the rural structure, then we should not forget the important part of our country, that is Northeast. If we could see the matriarchal society of Jaintiya community in Meghalaya and many other communities in the Northeast, the whole family is dominated or ruled, economic dominance by a female. Matrilineal society. It's a matrilineal society. And always the property goes to the, in few communities of Meghalaya, West Khasi community basically. Khasi community, if you could see, the property of heritage property goes to the youngest daughter, not through the son. So these situations are there. If you see the Janajatis of other states, before marriage, the husband, the would-be husband, has to stay within the family of the girl. Okay, and there if the whole family think that he is eligible to get married their daughter, and the girls herself decide that she can marry to the man, then only the marriage happens. Otherwise, बहुत ऐसा फैमिली लड़के रहे जिन्होंने 1 साल 6 महीना काम किया होने वाले ससुराल में, और उसके बाद उसको कहा गया कि he is not eligible to become a husband of that particular girl. तो इस तरह का women empowerment situation you could see in our country exist, and many fold it has streamlined the development of women empowerment. The restriction which we could see in the middle class families or the higher elite class, the women restriction on women, such like as you could not go outside at the night, you cannot
choose your decision according to buy a land or relationship maintain or marriage. In Khasi community, if woman like a man or she decided that she want to marry him, the person has to marry. Like that situations, if the person has given any indication that he wants to get married, then he has to do. He cannot bypass it. It's a social structure and social pressure persist on it, that choice of the girl should persist. And like that situation, property, choice, decisions making in the market, business, everywhere that dominance has been seen. So it's a culture of India where we could see that various color of empowerment, women empowerment, caste empowerment, religious empowerment is persist. We need to nurture it for the further development and existence of India in a better form. जी, थैंक यू। बहुत ही आपने उत्तर पूर्वी राज्यों का भी उदाहरण दिया, वहाँ की जनजाति में कैसे लैंगिक साम्य और एक कह सकते हैं कि विमेन डोमिनेंस करने वाली सोसाइटी, और वहाँ कैसे महिला अपने परिस्थिति को स्थापित करती है, उसके बारे में आपने बताया। हाँ, इसमें एक और ग्रामीण सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण पहलू है जेंडर। जब हम बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जेंडर भी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण सामाजिक संरचना में जो जेंडर है, महिला पुरुष का, या मतलब एक तरीके से जो परिस्थिति की बात हम करें, स्टेटस की बात हम यहाँ पे कर सकते हैं कि कैसे है। तो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना में आप देखते हो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय सामाजिक संरचना है, लेकिन प्रोफेसर महतो जी ने बताया कि भारत में आज भी, चाहे दक्षिणी भारतीय राज्यों में, चाहे वो उत्तर पूर्वी राज्यों में, कई जगह आप मातृवंशीय और मातृपक्षीय परिवार और मातृपक्षीय व्यवस्था भी आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि महिला और पुरुष के अलग अलग प्रकार हैं, विमेन और मेन के अलग अलग फंक्शंस हैं सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनके अलग अलग काम हैं और उनमें साम्य है। जिसे आज हम कह देते हैं कि महिला का शोषण हुआ है, महिला को कहीं न कहीं जो कुछ मेन स्ट्रीम के कार्य उनमें नहीं रखा गया, ग्रामीण, विशेषकर ग्रामीण सामाजिक संरचना में। लेकिन जब आप देखोगे गाँव में जाके, तो कई बार आप देखो, कई परिस्थितियों में आपको लगेगा कि वहाँ पे साम्य है। तो ये सब व्यवस्था भी हम देख सकते हैं। डॉक्टर बलकार सिंह जी, जो ग्रामीण महिला है, उनकी जो स्टेटस है, उनकी परिस्थिति है, वो कैसी आप देखते हैं भारतीय दृष्टि? बूटा जी, प्रोफेसर अरविंदो महतो ने नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण दिया था कि जो वहाँ की जो महिलाएं हैं उसके नाम पर संपत्ति है, निर्णय लेने की अक्षमता है, अधिकार है, काफी कुछ उन्होंने विस्तार से बताया। परंतु जो उत्तर भारत की तरफ देखें तो कई बार कहते हैं कि लोग कि पिता के नाम से सब चलता है। आप याद करिए, जब बच्चा अपने नाने के घर जाता है तो उसकी माँ के नाम से पुकारते हैं। जैसे किसी का नाम कमला है, किसी माता का नाम, अपने नाना घर जाता है तो उसके पिता का नाम नहीं कहते, उसे कमला का लड़का लड़की के नाम से पुकारते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों का बराबर इस तरह से समाज ने अधिकार दिया है, चाहे नामकरण से हो, चाहे संपत्ति के आधार पर हो। ठीक है कि कुछ अलग अलग जातियों में क्षेत्रों के आधार पर जहाँ आदमी निवास करेगा, यदि पिता घर करता है तो पिता का नाम चलता है, यदि माता के पियर में कह सकते हैं जहाँ माता का जन्म स्थान था वहां करता, तो आमतौर पर लंबी पीढ़ी तक माता का नाम चलता है, उसके पूर्वज है, इस तरह की बात आती है। यदि अधिकार की बात करें महिलाओं की, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी भारत की ग्रामीण समुदाय की बात करें, ऐसा कोई परिवार नहीं है जब महिलाओं की बात ना सुनता हो या ना मानता हो। आज भी जो ज्यादातर लोग जो गाँव में रहते, खेती करते हैं, पशु पालते हैं, पशु पालते तो महिला तय करती है कि पशु किस प्रकार के है, खेती में क्या बोया जा सकता है या फसल कटाई क्या, तो क्योंकि माँ के साथ बच्चे होते हैं और माँ के साथ बच्चों का जब जुड़ा होता है। जब कोई भी व्यक्ति घर आता है या किसान आता है तो सलाह पूरे परिवार से लेता है, तो आखिर में सलाह आमतौर पर महिला की मान जाती है। हाउस होल्ड डिसीजंस या गृहस्थ की जो निर्णय है उनमें महिला की बड़ी भूमिका। बिल्कुल, ये सच्ची बात है। आज भी देख लीजिए, यदि कपड़ा, आजकल मुझे नहीं लगता कि शादी के समय सारा कपड़ा ही परिवार खरीदता हो, महिलाएं जाती है आज भी खरीदने के लिए। शादी की अधिकतर तैयारियां महिलाएं करती। ठीक है, पुरुष बाहर का काम जरूर करते हैं, कुछ जिम्मेदारी महिला नहीं जा सकती और पुरुष जाते हैं,
परंतु यदि निर्णय लेने की आज बात देखी जाए और यदि काम की निर्णय लेने की बात अधिकतर महिलाएं करती है, और काम की बात भी देखी जाए, खेती का जो ज्यादा काम होता है उसमें महिलाएं ज्यादा काम करती। पशुपालन का 90% काम महिलाएं करती हैं। खेत में कटाई का काम और चुनाई का काम, जो कपास चुनाई करते हैं, धान की कटाई करते हैं, उसे 90% काम महिलाएं करती हैं। और इसके अलावा बहुत से ऐसे काम है। घर का बैंक भी हम कह सकते हैं, ग्रामीण भारत में सामाजिक संरचना महिला को कह सकते हैं। हाउस होल्ड बैंक, घर का बैंक, घर में जो पैसे रखने का काम भी आप देखेंगे कि कहीं न कहीं महिलाओं के पास। बिल्कुल, आपने बहुत सी बात बताई। सरल, तो जब नोटबंदी हुई थी, लेकिन ये नोटबंदी हुई थी तो उसमें तो कुछ किस्से चले थे कि सोशल मीडिया के ऊपर कि महिला ने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि जहर खाने के पैसे नहीं है। जब देखा गया तो उसके पास काफी निकले। क्योंकि महिला एक ये सोचती है कि बुरा वक्त में कैसे जिया जा सकता है, और यदि किसी कारण से गरीबी या किसी कारण से व्यक्ति का काम ना चले, खेती ना हो, प्राकृतिक आपदा आ जाए, तो महिला पूरे परिवार की सोचती है। बल्कि ये देखा जाए दोनों पुरुष महिलाओं की बात करें, पुरुष एक समय पर पैसे कमाने की सोचता है, महिला पूरे परिवार की सोचती है। वो रसोई की सोचती है, वो कपड़े पहनने की सोचती है, वो पशु क्या खिलाना उसकी सोचती है, पड़ोस में किसको क्या देना सोचती है, और त्योहार पे क्या बनाना है। पुरुष को नहीं पता होता घर में घी है, दूध है, सब्जी है, पैसे लेने हैं। महिला को पता होता कि त्योहार आएगा, इस समय क्या लेना, बच्चों को क्या खिलाना है। एक तरह से कहते पारिवारिक ढांचा है वो पूरा महिला पर निर्भर है, सही मायने में देखा जाए। मेरा इसमें यही कहना था विशेष इसी एंगल में कि एक्चुअली हम जब वुमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट भी बात करते हैं, तो अर्बन और रूरल की जब कंपैरिजन करते हैं जी, तो मेरा कहने का मतलब इसमें है कि गांव के महिलाएं कंपैरेटिवली अर्बन एरिया मोर एम्पावर्ड है। बिल्कुल ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डिसीजन टेकिंग, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, इन टर्म्स ऑफ सोशल मिंगलिंग, किस रिश्ते नाते के घर जाना है वो डिसाइड करती है। पर अर्बन एरिया में ये डिसीजन उसके हाथ में बहुत कम होता है। तो मेरा कहने का मतलब तात्पर्य यही था कि अर्बन और रूरल की जब डिसाइड करते हैं, और जब रूरल में और एक्सट्रीम में जाते हैं, जैसे थोड़ा नॉर्थ ईस्ट और जाएंगे, तो और एम्पावरमेंट की पैमाने थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी का एंगल में हम मैट्रियार्कल सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट के साथ साथ जो आज वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं कि भारत में महिला का एम्पावरमेंट नहीं है, एक्चुअली वो वेस्टर्नाइज हो चुके हुए अर्बनाइज सोसाइटी को देख के बोलते हैं। बिल्कुल। जबकि भारतीय समाज को अगर देखा जाए तो उसमें वुमेन आर मोर एम्पावर्ड। आउटसाइडर व्यू है, वो एम्पावर्ड है पूरी तरह से। आउटसाइडर व्यू है क्योंकि हाँ, आउटसाइडर व्यू नहीं, इन द सेंस कि जो वेस्टर्नाइज हो गए, अगर उसको आप देखेंगे तो वहां तो रेस्ट्रिक्शंस आ गए, वहां तो हस्बैंड के डिसीजंस चलने लगे, रात में नहीं निकलने के डिसीजंस चलने लगे, उसमें टीवी पे ऊपर डोमिनेंसी आने लगा, फ्लैट खरीदने के ऊपर डोमिनेंसी आने लगा, देयर आर डिसीजन डोमिनेंसी आने लगा। लेकिन रूरल एरिया में जैसा बलकार जी बता रहे थे, डॉक्टर बलकार एज मेंशन, कि ये सामंजस्य जो है एक वो बहुत महत्वपूर्ण बात याद आ रही है, बहुत ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में जो आप दोनों ने बताया बहुत ही विशेष बात, उसमें खास बात एक और आती है कि जो आज हम देखते हैं पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित परिवार है या समाज है, उनमें देखते हैं कि व्यक्तिवाद है, लेकिन जो ग्रामीण समाज है वहां पे सामाजिक दृष्टि को या पूरे समाज को साथ लेके या समुदाय की भावना के साथ चलता है। तो उसमें क्या है कि प्रकार की विशेष से जुड़ी हुई बात है कि हर व्यक्ति का अपना एक फंक्शन है। ग्रामीण महिला का जो फंक्शन है वो उसको पूरा करेगी, उसके आधार पर डोमिनेंस की बात नहीं है। मतलब हम वहाँ पे कह सकते हैं किसी के ऊपर डोमिनेंस नहीं करना, बल्कि आपस में सामने बिठाते हुए अपनी गृहस्थी को, अपने जीवन को चलाना है। और व्यवहार में भी ऐसा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्तिवाद जब हावी होता है तो वहाँ पे क्या डोमिनेंस की स्थिति आती है या एक दूसरे पे आधिपत्य स्थापित करने की आती है। लेकिन जब पूरे समाज को सामुदायिक भावना के साथ चलाना होता है और एक तरीके से सबके परमार्थ की भावना के साथ चलाना है, तब वहाँ पे क्या है, किसका क्या काम है, किसका, हम ये कह सकते हैं कि कार्य विभाजन के आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि जब हम रिसोर्सेस का शोषण करते हैं जी, और रिसोर्सेस का अपने उपयोग में व्यवहार करना, दोनों में थोड़ा सा ही रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इसको रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं कहेंगे। हमें जरूरत है तो उस रिसोर्स का हम यूज करना, ठीक है। लेकिन जरूरत ना होते हुए भी क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, हम एसी चला के रख सकते हैं, और उसकी जो रिसोर्सेस का जो
प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट इज द बेसिकली द वेस्टर्नाइजेशन फिलोसॉफी चलता है, जिसपे हम अगर इंडियन फिलोसॉफी देखेंगे तो उसमें हमने रिसोर्सेस को हमेशा संजोगना और उसको संभाल के रखना ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उस रिसोर्सेस का यूज हो सके। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति नहीं है, उपभोग की प्रवृत्ति नहीं है ना हमारी। हमारी तो सिर्फ जितनी आवश्यकता है उतना ही, जितना आवश्यकता है हमें उतना ही यूज, भोग नहीं करना है। लेकिन अगर वेस्टर्न फिलोसॉफी देखेंगे तो वो भोग की प्रवृत्ति उसमें जागरूक होती है, और जो भारत में रह के वेस्टर्नाइजेशन प्रवृत्ति की ओर बढ़ गए, तहां से रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन जब शुरू होते हैं तो कौन व्यक्ति ज्यादा रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर सकता है, वो व्यक्ति सत्ता के ऊपर मूवमेंट होता है। एंड दैट कम्स कि व्यक्ति सत्ता हावी हो जाती है सामाजिक सत्ता से, और सामाजिक सत्ता से जब व्यक्ति सत्ता हावी होती है तो रिसोर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर नहीं जाते हैं। रिसोर्सेस का जो है एनवायरनमेंट का शोषण होने लगता है, जिसका हम आज के दिन में जिसको कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, इसके कारण डिग्रेडेशन आ रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। मान लीजिए अगर देखा जाए कि हमारे ट्रेडिशन सिस्टम में गंगा को अगर हम अपना गंगा रिवर को अगर हम देवी मानते हैं तो वहां पे ऐसा कोई गंदा चीज नहीं फेंकना है जिससे उसका गंदगी बढ़े। लेकिन जब हम रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे तो उसमें कोई भी एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी जो अपना कूड़ा कचड़ा है सारे डाल दिए जाए तो वो गंदा होता है और धीरे धीरे वाटर पॉल्यूशन होता है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन की ओर ले जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर बूटा एज वाज टेलिंग कि व्यक्तिवाद के ऊपर हम बढ़ रहे हैं एक्सप्लॉयटेशन के थ्रू। जी, जब रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो व्यक्तिवाद में चले जाएंगे और सामाजिक ताना बाना जो है वो बिखरता हुआ नजर आता है। जी जी। तो जैसा कि आज की हम चर्चा में हमने जो ग्रामीण सामाजिक संरचना के विभिन्न पहलुओं को छुआ, उनके बारे में बात की। ग्रामीण सामाजिक संरचना में जिसमें जाति, परिवार, जजमानी प्रथा और जेंडर स्ट्रक्चर या लैंगिक जो संरचना है, और उन सब के आधार पे हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जो ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें शोषण दोहन की प्रवृत्ति नहीं है। उसमें क्या है, एक साम्य की प्रवृत्ति है। उसमें क्या है, उपभोग की प्रवृत्ति नहीं है। उसमें क्या है, कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस की भावना है, सहसहयोग, सहअस्तित्व की भावना है, परमार्थ की भावना है। और साथ साथ जैसे परिवार की बात प्रोफेसर महतो जी और बलकार जी दोनों ने बताया कि परिवार में क्या है, परस्पर आत्मनिर्भरता है, इंटरडिपेंडेंसी है। भारत का जो परिवार है वो विशुद्ध रूप से एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, बल्कि उसमें जॉइंटनेस है और उसकी मौलिक प्रवृत्ति आज भी देखने को मिलती है। जो भारतीय परिवार व्यवस्था है वो एक व्यक्तिवाद पे आधारित नहीं है, बल्कि एक हम ये कह सकते हैं कि परमार्थवाद पे आधारित है, या हम ये कह सकते हैं कि एक समूह में रहने की प्रबल इच्छा पे आधारित है। सामुदायिकता की भावना को भी बढ़ाती है। और उसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना है उसमें अगर बाहरी दृष्टि से अगर उसको देखेंगे तो उसमें हमें बहुत से दुष्कार्य दिखेंगे, लेकिन जब हम उसे इंटरनल दृष्टि से देखते हैं तो उसमें बहुत से सकारात्मक पहलू देखते हैं। एक सोशल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी, सामाजिक एकत्रीकरण की बात, सामाजिक समरसता की बात भी देखने को मिलती है। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, ये निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते।